तो आज आम इश्यू है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3 सो मुझे भाया रोटेशन बेसिस रे जीएस पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 तो सो दैट तुमको लगे कि सब पेपर किसी तुम कवर हो ट्राई करवा कि नेक्स्ट 25 दिन जो कही कि एवरीडे 5 क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा येस 4 क्वेश्चन आम करुले एवं 5टा करे समय जदि हो जाऊँगी जिते क्वेश्चन मैक्सिमाइज कर बेटर हम आमपाई जिते क्वेश्चंस आमर मैक्सिमम हो पार आमपाई बेटर हम कि 125 प्लस क्वेश्चंस आम सॉल्व करने को ट्राई करवा सब पेपर एटलिस्ट कौन से 30-40 सब पेपर क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आम डिस्कसन करवा एवं से क्वेश्चंस डिस्कसन कले तुमको गोटे कॉन्फिडेंस मिल गोटे एनरिचमेंट मिल यार फैक्ट्स गुड़ा तुम्हें सब एग्जाम रिप्रेजेंट कर ओके तो से अनुसार आम 1 by 1 आज स्टार्ट करवा मुझे वेट करी कि सब पिला आसी जातु तो क्वेश्चंस आम देखा स्टार्ट करदे तो इवालुएट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एज ए सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस फॉर इंडिया हाइड्रोजन जदि आपण मैंने समस्त जानवे दिस इज बेसिकली बिलोंग्स टू नॉन फॉसिल फ्यूएल ओके हाइड्रोजन बेसिकली नॉन फॉसिल फ्यूएल तो यार जदि पोटेंशियल देखा बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन तो सही पोटेंशियल कौन कहीं नेक्स्ट नेक्स्ट जो आमर एनर्जी सोर्सेस फॉसिल फ्यूएल आम कम करने चाहूँ रिन्यूएबल सोर्सेस आम बेसिकली रिन्यूएबल सोर्सेस आड़ को आम जावाक चाहूँ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस तो आमर जिते भी फॉसिल फ्यूएल प्रोडक्शन मेनली स्टीम थ्रोरे या कोल पावर प्लांट जोटा कि कहूँ थर्मल पावर प्लांट ता थ्रोरे प्रोडक्शन होची मोर देन 60% ऑफ जो आमर तुम एनर्जी रिक्वायरमेंट ताको फुलफिल होची थ्रो फॉसिल फ्यूएल जोटा कि ताकू रिप्लेस करने तो आम सेमती इंट्रोडक्शन दबा कि ग्रीन हाइड्रोजन इज ए सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूएल दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक wind, solar and hydropower. It's promising energy carrier that can replace the fossil fuel and hard to abate sector जोटा कि fossil fuel जो ही आमर pollution आमर environment climate change global warming ये सब incident आमको देखा मिले तो आम ग्रीन हाइड्रोजन कौन तार इंपोर्टेंस देखा देन कनक्लूड करवा तो ये बेसिकली ये सिस्टम देखिए जदि तो प्रथम आम स्टार्ट करवा कि ग्रीन हाइड्रोजन इज ए सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूएल जोटा कि आम देखिलु जोटा कि प्रोड्यूस करुच्ची रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी रिप्लेस कर बेसिकली प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी बाकी हाइड्रोजन सोलार विंड ये सब it's promising energy carrier that can be replaced the fossil fuel in India. And India has launched the national green hydrogen. This is very important. Green hydrogen mission. याको तुमको मेंशन करिया पड़ियो इंडिया has launched the national green hydrogen mission to make basically country a global hub for using producing and exporting green hydrogen. ओके मु आज 5टा इश्यू जमी नानो टेक्नोलोजी हो ताऊपर किसी इश्यूज देखी तुम रिसेंटली जो जो न्यूज रे अच्छी से रिलेटेड आम सेक्टर आज देखा जमी स्टेम स्टेम उपरे आम देखा ओके सो कौन ना इंडिया हैज लॉन्च्ड यदि ग्रीन हाइड्रोजन कथा देखा इंडिया हैज लॉन्च्ड द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू मेक कंट्री ए ग्लोबल हब यूजिंग प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन okay using producing and exporting green hydrogen the mission has target of producing 5 million metric ton mmt of green hydrogen annually by 2030 ओके ये मिशन कौन टार्गेट अच्छी जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तो मेन ए टार्गेट है कि इंडिया को गोटे ग्लोबल हब कर जोटा कि यूज करवा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवा एवं एक्सपोर्ट करवा एवं आउ गोटे मिशन कौन ना 5 मिलियन मेट्रिक टन 5 एमएमटी मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन जी की एनुअली प्रोड्यूस करियो बाय 2030 हैला तो ये थिला तुम इंट्रोडक्शन रे तुम्हें कौन देल ताको गोटे इनफॉरमेशन देदेल जे एग्जामिनर सी सियोर हो
कि ये पार्टर नॉलेज ये पिलार भल अच्छी ये पार्ट्रे तुम माने गोटे कॉन्फिडेंस आसीज तुम राइटिंग उपरे कि तुम्हें या ऊपर भल से आइडिया अच्छी तुम सो देन यू कैन गो अबाउट importance of green hydrogen for India. Importance of green hydrogen for India. तो ग्रीन हाइड्रोजन आम देखिले नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ही अराउंड तुम आंसर रहा दरकार सो ता मिशन विषय लिख माने यू हैव टू नो तार एम कौन तार ऑब्जेक्टिव कौन कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन रो ऑब्जेक्टिव कौन क्लियर So importance of green hydrogen for India. India is a rising country confront increasing energy demand. आमर एनर्जी डिमांड डे बाय डे बढ़ी चलती तुम्हें जाकिब बिना एनर्जी बिना पावर रे आमे ना क्लासेस नहीं पारिबु ना आमे पाठ पढ़ी पारिबु ना आमे कम्युनिकेट करि पारिबु ना आमे ट्रांसपोर्ट सिस्टम करि पारिबु एवरीथिंग एडमिनिस्ट्रेशन चली पारिबु एवरीथिंग विल बी स्टॉप इफ दैट इज एनर्जी डिमांड इज नॉट मेट विथ तो से आमे एनर्जी तो जरूरी बट एनर्जी मोस्टली प्रोड्यूस होची फसिल फ्यूल रू दैट इज कोल वगैरह रू प्रोड्यूस होची तो फसिल फ्यूल प्रोड्यूस ने से तार आउ गोटे रिपरकेशन कौन ना तुम पॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग भाया फेनोमेनन आसी जाउची तो से आम कौन करवा तो एनर्जी डिमांड को भी मीट करवा एवं टार्गेट करवा नेट जीरो कार्बन एमिशन टार्गेट जोटा कि बाय 2070 आम टार्गेट नेट जीरो कार्बन एमिशन डू यू नो व्हाट इज नेट जीरो कार्बन एमिशन आई होप समस्त जानी नेट जीरो कार्बन एमिशन तो green hydrogen offer a sustainable and diverse energy alternative with considerable benefits कौन फर्स्ट ला रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन तो नेट जीरो कार्बन एमिशन माने जिते कार्बन एमिशन होथबो सेतिकी आमे एठी तार यूज ही खाली आउटपुट को एयर को बेसी जितिक रिक्वायरमेंट सेतिक जाउथबो कार्बन ताठू एक्स्ट्रा जाउ नथिबो so reducing the carbon emission the green hydrogen helps decarbonized they are very important decarbonize hard to abate sector जोटा कि स्टील रे हो कार्बन बेसी एमिशन सीमेंट शिपिंग ट्रांसपोर्ट जोटा कि लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्ट है इलेक्ट्रिफिकेशन इज चैलेंजिंग जो इलेक्ट्रिफिकेशन पॉसिबल नुह बेसिकली से सब जगह तो फर्स्ट है कौन ना रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन गोटे प्रोब्लेम है प्रथम इंपोर्टेंट है कौन ना ग्रीन हाइड्रोजन रो इंपोर्टेंस कौन फर्स्ट है रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन इंडिया कैन ड्रास्टिकली रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल कीपिंग विथ पेरिस एग्रीमेंट एंड इट्स नेशनली डिटरमिन्ड कंट्री एनडीसी पेरिस एग्रीमेंट 2015 COP21 वेरी इंपोर्टेंट ये सब तुमको मन रखि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 इज वेरी इंपोर्टेंट वन Then energy security and independence. Energy security and independence. India import 85% of its oil and 53% of its natural gases. I mean import from this data is very important for this exam. खास करके जे मेंस दौच एथर तांको पई इवन एथर जे न दौच भी नेक्स्ट टाइम भी जे भी दबो डाटा स्पेसिफिक तुम्हें रखी थाओ so producing green hydrogen domestically utilizing abundant solar and wind energy will eliminate import dependency assuring energy security eliminate import dependency so first है कौन ना कार्बन एमिशन रिड्यूस करिवो आउ कौन डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल भी वो ड्रास्टिकली रिड्यूस करिवो एंड थर्ड है कौन ना एनर्जी सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस एनर्जी सिक्योरिटी सो इंडिया जोटा कि आम देखिलु एत गुड़ा आम ऑयल एंड नेचुरल गैसेस इंपोर्ट करूँ So producing green hydrogen domestically utilizing abundant solar and wind energy will eliminate import dependency and assuring energy security. Then boosting renewable energy integration. Boosting the renewable energy integration. Green hydrogen function as an energy storage solution.
It functions as an energy storage solution, addressing the intermittency, basically intermittency of renewable sources like solar and wind. So कौन ताले बेनिफिट है सब इंपोर्टेंट है गोटे रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन इंडियन जोड़े कि डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूएल कमिजिव एनर्जी सिक्योरिटी एंड डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस रहिबो एंड बूस्टिंग द रिन्यूएबल एनर्जी जोटे कि सोलार एनर्जी विंड एनर्जी को बूस्ट करिवो तार रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स बना जीवो ओके मेक ग्रीन हाइड्रोजन एंड एनहांसिंग ग्रिड स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जॉब क्रिएशन ये भी गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर अच्छी ग्रीन हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट and green hydrogen industry has the potential to attract investment, establish new companies, generate jobs. एबे देखुच बहुत सारा सोलार पावर प्लांट्स आसिलानी बहुत सारा सोलार इंस्टीट्यूट आसिलानी सेही माने बेसिकली जॉब क्रिएट करछथि अक्रॉस द वैल्यू चेन प्रोडक्शन हो स्टोरेज हो ट्रांसपोर्टेशन हो एप्लीकेशन हो इंडियन इंटेंड्स टू बिकम ए ग्लोबल पावर हाउस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन थ्रू इट्स नेशनल हाइड्रोजन मिशन स्टार्टिंग 2021. Okay, so next है hydrogen fuel cell can power long haul trucks, buses, ship and trains. This is very important. एटा फ्यूचर हवा को जाउची एटा फ्यूचर हवा को जाउची कि हाइड्रोजन fuel cell basically long haul trucks can power long haul trucks, buses, ship and train where battery based systems are not feasible. Where battery based systems are not feasible due to weight and range limitation. Due to weight and range limitation. For example, Indian Railway aims to achieve net zero carbon emission by 2030 and is exploring hydrogen power train. So hydrogen power है basically emission होबनी net zero carbon emission. माने नेट जीरो कार्बन इमिशन समझते बुझी चलती. नेक्स्ट देखा कनक्लूजन. तो ये थिला तुमर कार्बन ग्रीन हाइड्रोजन तार रिक्वायरमेंट कौन एवं तार इंपोर्टेंस कौन तार आम इंट्रोडक्शन देखिले एंड तार कनक्लूजन. तो ग्रीन हाइड्रोजन होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल एज ए सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स इन इंडिया. इट कैन एड्रेस मल्टीपल चैलेंजेस इंक्लूडिंग एनर्जी सिक्योरिटी, decarbonization, economic growth. However, for large-scale adoption, India must overcome production cost, infrastructure gap, technological barriers. Okay. तो ये तुम कनक्लूजन ये तुम जब आंसर को लिख तार पॉइंट वाइज तुम एवं ही लिखिनि तुम भाव लिख से भाया समय मिलनी यही समय यही क्लासेस पाठ यही समय ही लिखिकी काम कंप्लीट कर. नेक्स्ट देखा द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्टेम. स्टेम जानिच व्हाट इज स्टेम एंड डिस्कस द चैलेंजेस एंड एड अपॉर्चुनिटी इन इंडिया. ये भी न्यूज रे थिला किछ समय पूर्व. व्हाट इज स्टेम you have to define, write about the STEM. Then challenges for women in STEM in India, opportunities for women in STEM. ये सब देखिवा वन बाय. So STEM is a science, technology, engineering and math. Is the foundation for innovation, progress, societal advancement. STEM.
तो कौन कौन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ इज द फाउंडेशन ऑफ our इनोवेशन प्रोग्रेस सोसाइटल एडवांसमेंट. तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वुमेन आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन स्टेम ऑक्युपेशन. ये ऑक्युपेशन रे साइंस रे टेक्नोलॉजी रे इंजीनियरिंग मैथ रे वुमेन रो अंडर रिप्रेजेंट सेटा जेंडर गैप इंडेक्स किए पब्लिश करे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रो जेंडर गैप रिपोर्ट अनुसार वुमेन हेले अंडर रिप्रेजेंटेड अच्छा स्टेम ऑक्युपेशन विथ शेयर ऑफ ओनली 28% कंपेयर टू 47.3% इन नॉन स्टेम ऑक्युपेशन. नॉन स्टेम यही चार्टा सेक्टर छाड़ीदे अलग सेक्टर में वुमेन रिप्रेजेंट एटा जेन्युइनली आम जाचु वुमेन रिप्रेजेंटेशन अधिका अच्छी. ओनली 14 to 16% of India's STEM workforce are women. इंडिया इवेन आहरी कम 28% ग्लोबल रे ग्लोबल 28% वुमेन है स्टेम रे अच्छा साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ. बट इंडिया मात्र 14 ରୁ 16%. इंडिया मात्र 14 ରୁ 16% जे कि स्टेम वर्कफोर्स आछन वुमेन सिग्निफिकेंटली लोअर एज कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज. ग्लोबल एवरेज रु ये लोअर पाइबो. So challenges for women in STEM, cultural and social barrier, very important. Traditional gender roles was disproportionate home responsibility for women. Disproportionate home responsibility on women, limiting their capacity, pursue difficulty, STEM career, difficult in STEM career. Basically, तांगर capacity limit करिवा. बेसिकली मेन है होम रेस्पॉन्सिबिलिटी कहार ना वुमेन मुकर सेटा गोटे गोटे डिफिकल्ट हो जाउची. अर्ली मैरिज एंड फैमिली प्रेशर फ्रिक्वेंटली कॉज कैरियर सस्पेंशन और ड्रॉप आउट फ्रॉम स्टेम डिसिप्लिन. अर्ली मैरेजेस है पिला से सस्टेन कर डिफिकल्ट हो. तो ये है फर्स्ट है कौन ना कल्चरल एंड सोशल बैरियर जोटा कि आम ऑलमोस्ट समस्त जाचु. Then workplace disparity, lack of gender friendly regulation such as flexible work hour, maternity leave, child care facility inhibits women from continuing to participate. Women frequently experience gender discrimination and unconscious bias in hiring, promotion and leadership roles. In hiring, promotion and leadership roles. तो गोटे कौन ना फ्लेक्स वर्क प्लेस रे जो डिस्पारिटी रही है आम समस्ते भी जाचे ये जिनस कि जेंडर आउ गोटे कथा कि तुम स्टेम स्टेम डिसिप्लिन वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी कम. तुम्हें जीव गोटे ऑफिस रे जड़े ही तुम एका थी अनइजी फील हुए वुमेन मानक. देन लिमिटेड लीडरशिप रिप्रेजेंटेशन, लिमिटेड लीडरशिप रिप्रेजेंटेशन. वुमेन अकाउंट फॉर ओनली 15% of the research position and less leadership in important scientific institutions such as ISRO, DRDO and CSIR. Only 15% of the research position से लेट्स एवं आउ लीडरशिप रे से बहुत कम अच्छा. लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत कम अच्छा. The lack of women in decision making position restrict their potential to influence legislation and mentor the talent. चला नहीं गोटे कौन ना लिमिटेड लीडरशिप रिप्रेजेंटेशन, वर्क प्लेस डिस्पारिटी, कल्चरल एंड सोशल बैरियर एंड रिटेंशन चैलेंजेस. Many women leave STEM field after having children or in the middle of their career due to lack of re-entry program and support structure. A gender pay gap and insufficient incentive. Gender pay gap भी अच्छी किसी जगह रे
and insufficient incentive discourage women from pursuing STEM career. तो यही 5-6टा पॉइंट जो अच्छी ताकू लिखिद कि चैलेंजेस कौन कल्चर सोशल बैरियर वर्क प्लेस डिस्पारिटी लिमिटेड लीडरशिप रिप्रेजेंटेशन रिटेंशन जोटा कि चैलेंजेस रही पारती देन लैक ऑफ रोल मॉडल्स STEM occupation are frequently viewed as a male dominated field भी आमे समस्ते blindly एटा को accept करिया. So the absence of visible female role model in STEM inhibits young girls from studying science and engineering. Even तुम देखो majority जो girls माने अछंती science stream को जानते नहीं ना ना mainly इंजीनियरिंग कॉलेज रे खोजी पकेव कि अलग साइंस फील्ड रे खोजी पकेव मिलबेनी मोस्टली फीमेल माने मिलबे आर्ट्स रे आउ साइंस माने मिलबे मेल माने. So rural urban divide. Girls in rural area have limited access to STEM education. है ना नहीं? So rural area and resources due to economic and infrastructure barrier. Girls are more likely than boys to drop out of secondary school. These are basically the major factor, the major challenges for women to in the STEM in India. मात्र 14% वुमेन कि टोटल वर्कफोर्स 14% ना कि टोटल वुमेन टोटल वर्कफोर्स 14% वुमेन जी कि स्टेम कैरियर रे अछंती स्टेम फील्ड रे अछंती. Opportunity women high STEM education rate. India produces 43% of female STEM graduate, one of the highest in the world. आमे ग्रेजुएट साइंस रो ग्रेजुएट भी दोचु. This provides a solid foundation for developing skilled STEM workforce. इत्ते हेला परे भी आमे देखुछु कम अछंती. Then government initiative. The program such as women scientist scheme, women scientist scheme, Gati gender advancement for transforming and Vigyan Jyoti encouragement encourage women to seek and thrive in STEM career. Policies that promote gender parity in research funding and higher education create potential okay. So government initiative जोटा कि गति हो या वुमेन साइंटिस्ट स्कीम हो यांकर मेन एम कौन एंड विज्ञान ज्योति स्कीम ये वुमेन को एनकरेज करछि थ्राइव स्टेम रे एवं पॉलिसी दैट प्रमोट जेंडर पैरिटी इन रिसर्च फंडिंग एंड हायर एजुकेशन क्रिएट पोटेंशियल. देन growing STEM industry, the rise of technology driven industries like IT, biotechnology, space research created several workforce for the potential for the women. Women scientist देखी थी मूवी कौन थिला मंगलयान ना कौन मूवी थिला से सब वुमेन साइंटिस्ट सब थिले have made important contribution to the recent project of ISRO and DRDO. So re-entry program initiatives such as SCRB power that is promoting opportunity for women exploration research and private sector program help women return to the STEM field following a career gap पर return करि पाए. Role model and mentorship. So एमती देखिए women scientists such as Dr. Tracy Thomas, the India's missile woman कहा जाए, and Dr. Gagandeep Kang are encouraging role model. National mentorship and knowledge sharing platform can encourage and guide the young. Global trend and opportunity, increase emphasis on gender diversity. The global STEM workforce create chances for Indian women to participate in and collab. जेमती तुम्हें सुनीता विलियम्स रे एग्जांपल देई परियो. विलियम्स आदि आसी पहुंचले खाली बाहर थिले. The tech and digital platform. The proliferation of online education platform and digital resources has made STEM education more accessible to the women, particularly in rural area. जोंटा कि तांको पाखरे access न थाए तांको पाखरे ये मिलानी. And women are now able to participate in worldwide research, networking, skill development without physical restriction. So these are very important tomorrow points thila gote la tech and digital platform global trend and opportunities, role model and mentorship,
गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स तुम हाई स्टेम एजुकेशन रेट ग्रोइंग स्टेम इंडस्ट्री these are opportunity for the STEM and India has the ability to lead the world in the development by tackling systematic impediments by tackling the systematic impediments जहाँ अच्छी ताको हटेवा या ताको ठीक करिवा एवं implementing proven global tactics by establishing gender inclusive education encouraging mentorship addressing cultural preconceptions India may tap into women's untapped ability boosting innovation and inclusive growth STEM discipline ओके ये बड़ा एग्जांपल दे परिबो ये थिला तुमरो पार्टिसिपेशन वुमेन वुमेन रिलेटेड जीबी किछि भी पढिबो तुमे एइथरो भी गोटे एग्जांपल यार दे परिबो कि कार जो डाटा तुमे यूज करि परिबो जो मु तुम डाटा देली ये डाटा बेस तुमे करि परिबो कोउठी भी तो नेक्स्ट देखिबा रिलेटेड टू मोर the help of sustainable suitable example discuss the nanotechnology the field of nanotechnology तो बहुत सारे जगह यूज करी हबो मेडिसिन कोन यूज सेटिरो कीवर्ड कोन nanotechnology आगे डिफाइन करिवो व्हाट इज nanotechnology a branch of science and engineering devoted to designing producing devices and system by manipulating atoms and molecules at a nano scale nano माने केते जानि तो nano 10 to the power minus 9 billionth application देखियो so nanotechnology or nanotech is the technology that involve in manipulation of matter on atomic molecular and a supermolecular scale which is about 1 to 100 nanometer 1 nanometer is 1 billionth that is 10 to the minus 10 minus 9 it is the manipulation and use of material and devices so tiny that nothing can be built any एते छोटिया मटेरियल ताटू स्मॉलर आमे बिल्ड करि परिबुनु it involves a multidisciplinary approach involving fields such as applied physics material science chemistry biology surface science robotics engineering electrical engineering and biomedical engineering सबू मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच एथरे इन्वॉल्व थाए तो मैनिपुलेशन यूज ऑफ मटेरियल डिवाइस एते छोटिया आमे करिवु जो डिवाइस बनेबु ताको यूज करिगी सेटा ताठो छोट किछि करि हबो नै तो एप्लीकेशन द फील्ड ऑफ मेडिसिन तुमे नानो टेक्नोलॉजी ओवरऑल एप्लीकेशन देखिबो यार रिलेटेड थ्योरी देखि देबो क्वेश्चंस नानो टेक्नोलॉजी रिलेटेड आसिले जेमति छाडी की आसीबो नाही तो टारगेट ड्रग डिलीवरी nanotechnology offer targeted medicine delivery by employing nanoparticle deliver drug directly to specific cells or tissue avoiding negative effect and boosting therapeutic efficiency therapeutic माने फूड थ्रो करा माने डिजीज को क्योर करिबा थ्रो फूड माने डाइट प्लान थ्रो रे डिजीज को क्योर करिबा पई so nano carrier like liposome Dendrimers या polymeric nanoparticle are loaded with medications and directed to illness location. पूरा प्रॉपर जो लोकेशन रे टारगेटेड से इथमे कहजिबा जोठी प्रॉब्लम अछि सेही जगह जाकी हिट
typically using biological markers. For example, nanoparticles are being explored to deliver cancer treatment selectively the tumor cell, sparing normal tissue. Normally ଛାଡ଼ିକି କେବଳ ଟ୍ୟୁମର ଯେଉଁଠି ହେଇଛି ଟ୍ୟୁମର ସେଲ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଯାଇ ହିଟ୍ କରିବ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍। ତ ଏଇଟା ନାନୋ ପାର୍ଟିକଲ ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରାହେଉଛି। ନାନୋ ବେସ୍ଡ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ nanotechnology enable development of sensitive diagnostic tools capable of detecting diseases at early stage by recognizing biomarker at very low concentration. What do you mean by biomarker? Anyone having any idea about it? हेरिडिटरी खाली कहबनी बेसिकली आम डिजीज जो कज होची डिजीज जहाँ होची ताकू केमिति आइडेंटिफाई करी हबो थ्रो थ्रो बेसिकली जीन्स थ्रो रे हो मो जेनेटिक जोटा कि सेटा को गोटे ये कहूँ जेटा कि हेरिडिटरी कहूँ जीन्स थ्रो रे हो मॉलिक्यूल्स थ्रो रे हो किंबा कैरेक्टरिस्टिक जो थाए जोटा कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ता थ्रो रे भी आमे आइडेंटिफाई करि परिबा कि डायग्नोस्टिक रे आमे यूज करि परिबा। तो वेरी लो कंसंट्रेशन रे आमे तो नानो टेक्नोलोजी सेटा एनेबल्स करिवो कोन ना जो डिटेक्ट करिवो डिजीज टाको अर्ली स्टेज रे जो डिजीज हवा जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट रो आमे देखि देबा कि ये एई भलिया प्रोसेस रे ये डिजीज टा हुए तार एई भलिया पार्टिकल रे एई भलिया ताकर गोटे सिग्नल सोर्स करेबो तो सेई डायग्नोस्टिक टूल रो करि हबो छोटो छोटो द नानो सेंसर एंड क्वांटम डॉट्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट कैंसर infections and other disorder with high precision. ये गोटे नानो सेंसर ये वेरी इंपोर्टेंट दिस gold nanoparticle are employed in detecting tumor marker in blood testing for early cancer diagnostic. तो ये मेथड एबे हाईफाई जगह करा गलानी। Quantum dots are fluorescent nanoparticles that can be connect to certain proteins, allowing precise imaging and malignant cell. तो ये गोटे तार एग्जांपल देले नानो सेक्सर क्वांटम डॉट्स की यूज करा जाए। देन नानो टेक्नोलॉजी इन इमेजिंग नानो पार्टिकल बूस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकल इमेजिंग प्रोड्यूसेस इंक्लूडिंग जोने की एमआरआई मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज and PET positron emission जोटा कि tomography and ultrasound are enhancing contrast and resolution. So example iron dioxide nanoparticle are employed as a contrast agent the MRI scan to produce sharper image and जोटा कि malignancy बहुत छोट लेवल को जाइए आम इमेज बन पार। So these are basically application. Then cancer therapy nanotech offer new cancer treatment such as जोटा कि hyperthermia therapy where nanoparticles are utilized to hit the tumor cell and destroy them without damaging neighboring healthy. ये फ्यूचर बेसिकली इस कैंसर थेरापी है फ्यूचर तुम्हें एबे यूएसए वगैरह रे ये सब यूज हवा स्टार्ट हो गला इंडिया रे से भाया यूज है नहीं बट ये आगो को देखिए ये फ्यूचर कहीं कैंसर ट्रिटमेंटा बहुत बड़ टफ आस्क आम एपर्यंत से केमो जोटा कि लार्ज स्केल केमो ही दौचु एवं किसी किसी जगह जदि आउटसाइड कौट हो रे पकई दौ बट ये नानो थेरापी थ्रो रे आमे एक्जाक्टली जो ट्यूमर सेल अच्छी सेठी हिट करिवो एवं सेई ट्यूमर सेल को ही मारिवो विदाउट एफेक्टिंग द नाइबरिंग सेल या हेल्दी सेल। देन रीजेनरेटिव मेडिसिन नानो टेक्नोलॉजी इज यूटिलाइज बिल्ड स्कैफोल्ड एंड नानो मटेरियल फॉर टिश्यू जनरेशन रीजेनरेशन आउ थ जोटा कि धर कटिगला कौटी टिश्यू मरीगला से टिश्यू को रीजेनरेशन करा जाई परिवो आउ ताको रिपेयर करा पर एडिंग द वुंड्स हीलिंग एंड ऑर्गन रिपेयर ये ये भी रिसर्च रे अच्छी देन एंटी माइक्रोबियल नानो पार्टिकल हैविंग एंटी माइक्रोबियल कैपेबिलिटी आर बीइंग प्रोड्यूस्ड to treat bacterial infection and drug resistance. Then take silver nanoparticle display high antibacterial effect
and are utilized in wound dressing, coating on medical devices, prevent infection. ये तो एबे यूज करा हो जेटा for nano particle. Then gene therapy. Lastly, gene therapy. Nanotechnology increases the transport of genes or genetic material into targeted cell to treat genetic problem. So nano carrier can shield the genetic material, and nanotechnology increases shield the genetic material from degradation and improve its transport efficiency. So ये गोटे तुम प्रॉब्लम जोटा कि so gene therapy, antimicrobial nanoparticle, cancer therapy, regenerative medicine, then तुम्हारा targeted drug delivery, nano based diagnostic, and nanotechnology in imaging. These are major nano sensor and quantum dots. These are very important application of nanotechnology. So nanotechnology application এবং what is nanotechnology. So देखिए nanotechnology has changed the world of medicine by enabling tailored medication delivery, early diagnostics, enhancing imaging, advanced therapy. Example like liposomal medicine, doxil, mRNA vaccination, and gold nanoparticle in diagnostic highlights its transformative potential. As research improves, nanotechnology will play a significant role in improving healthcare outcomes and addressing complicated medical cancer वगैरह ताको concern. So then देखिबा नेक्स्ट है डिस्कस द सिग्निफिकेंस इंडियाज थोरियम रिजर्व. ये भी बर्निंग इशू एवं थोरियम कौन हेल्प करिवो एनर्जी. ओके थोरियम है एनर्जी. तो इंट्रोड्यूस करिवो थोरियम रिजर्व कोंटी कोन अछि. So India has a significant thorium reserve in estimated around 11.93 million ton of in situ resources of monazite. थोरियम रिजर्व ए एरिया रे in situ reservation monazite. Kerala and Odisha alone contribute over 70% of the India's thorium. Kerala and Odisha पूर्व वगैरह पाइबो गंजाम रे. Thorium is a radioactive material that gives an olive gray hue when exposed to the oxygen and generating thorium oxide. Thorium is predicted to be over 3 times more prevalent than uranium in the Earth's crust. It is predominantly recovered from monazite sand. This is as a byproduct during the extraction of rare earth metal. तो मोनाजाइट सैंड रू बेसिकली रिकवर करा जाए. आ केरला रे मोनाजाइट सैंड बहुत ओडिशा रे. थोरियम रो एनर्जी सिक्योरिटी रो कोन तारो. तो इंडिया lacks huge uranium stocks. India lack huge uranium stocks which are crucial for conventional nuclear reactor. They are crucial for conventional nuclear reactor. In contrast, thorium is abundant and can serve as a viable alternative. बहुत अवेलेबल अच्छी यूरेनियम स्टॉक्स आज बेसिकली कम अच्छी आम इंडिया रे ता तुलन रे ये ताको आम यूज करि परिबा. थोरियम हमर रेडिली अवेलेबल अच्छी. Clean and sustainable energy. Thorium based nuclear power plant produces low greenhouse gases compared to coal based power plant. जानिचे समझ. Then reduced nuclear waste. Thorium reactor generate less long life radioactive waste. ये long lived माने बहुत किछि किछि रेडियोएक्टिव अछंती बहुत दिन पर बचंती. ये हला लो बहुत लेस प्रोड्यूस करे radioactive waste compared to the uranium reactor.
making it environmental friendly. India's first indigenous first breeder reactor at Kalpakam, Tamil Nadu, has demonstrated the feasibility of using thorium as a fuel sources. Basically, India lacks uranium बहुत कम अच्छी तो थोरियम रो abundance अच्छी ताकि यूज clean ଆଉ sustainable energy जोटे कि कंपेयर टू द कोल बेस्ड एनर्जी रिड्यूस न्यूक्लियर वेस्ट न्यूक्लियर वेस्ट को रिड्यूस करिवो जोटे कि कहीं ना लॉन्ग लेस लॉन्ग डाइव रेडियोएक्टिव वेस्ट देन यूरेनियम एंड इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस रिएक्टर जोटे कि प्रूफ कर कल्पकम रे कि फिजिबिलिटी अच्छी थोरियम यूज करि परिया थ्री स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में जानिछे गोटे नेचुरल यूरेनियम फेज यूटिलाइजिंग नेचुरल यूरेनियम इन प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर प्लूटोनियम phases जोटे कि reprocessing spent fuel from pressurized heavy water reactor to obtain plutonium for use in fast breeder reactor. Third है thorium phase, large scale utilization of thorium with breed of uranium 233 from FBR fast breeder reactor. So energy self sufficiency आ गोटे important है कौन ना energy self sufficiency. By tapping into the thorium reserve, India can reduce its dependence on imported uranium and uranium of fossil fuel dependent कमी जीवो. Cost effectiveness, thorium is 3 to 4 times more abundant than uranium. 3 to 4 times जते uranium अछि ताटू अधिक अछि, making it cost effective alternative. Abundance. India's massive thorium stockpiles are strategic asset that can change the country's energy. By advancing its three-stage nuclear power program and overcoming technology difficulty, India may attain energy self. So ये तीनटा स्टेज रे ही थोरियम स्टेज ला थर्ड स्टेज. Overcoming technological difficulty, India may attain energy self-sufficiency while meeting its sustainable. Thorium-based nuclear power plant provide key to the clean, secure, and abundant energy future. Okay, here a future. And last question. So आमे देखिले thorium based रो nuclear power plant रो तार significance कौन आ energy self sufficiency रे यार rule कौन. The last देखियो explain the role of robotics in disease management and rescue operation with example. Robotics रो यार भी recently ये news रे बहुत थिला. So disaster response robotics are robotic system used for preventing outspread of disaster damage under emergent situations such as for research, rescue, recovery, construction, etc. तो कौन ना आमे मेन आमे देखिथिलु कौन ना रोबोटिक्स रे डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट रे रोबोटिक्स रो कौन तार रूल एंड रेस्क्यू ऑपरेशन. So disaster response robotic कौन ना robotic system used for preventing outspread of disaster damage under emergent situations such as जोंटे कि search and rescue recovery and construction. So disaster changes its state as time passes. The application of robotic in disaster management. Search and rescue operation. The robot equipped with camera, sensor, thermal managing imaging can search for survivors in debris हो जेमती हमर avalanche हेइथिला fall debris हो tunnel हो other unsafe area where humans cannot easily. During 2011 Fukushima nuclear disaster in Japan, remotely controlled robots were deployed to monitor radiation level and search for damage inside the nuclear reactor. And drone, UAVs, unmanned aerial vehicles. Aerial drone provide a bird's eye view of the disaster affected region. Drone छाड़ी देले
photo उठिक helping assess magnitude of damage, located the survivors. They can deliver medicine, supply food, communication equipment area of cut off by the flood and landslide. जो area cut off ହେଇଯିବ ତାକୁ ସେଇଗୁଡ଼ା supply କରିପାରିବ food, medicine. For example 2015 ରେ ନେପାଳ ଆର୍ଥିକ ହେଲା. Drones were used to survey the damage and locate victim in the remote mountain region. तो न्यूज़ पेपर पढ़ा केते जरूरी तुमे केमिति जानिबा ये सब आपनकर जो एग्जांपल देई परिबो तुमे. Then disaster monitoring and assessment. Disaster monitoring and assessment. Robotics assist in gathering real-time data on environmental parameters. Disaster monitoring and assessment. Robotics assist in gathering real-time data on environmental parameters such as radiation, gas leaks, rising water level. Autonomous ground vehicle and drone use LiDAR, that is light detection and ranging, and thermal camera to create 3D maps for disaster response planning. During wildlife fire in Australia, California, firefighting drone equipped with thermal sensor track the fires spread and help firefighting to target the affected area. तो ये भी बहुत बड़ा हेल्पिंग ये करथिला. Okay, so disaster monitoring assessment मध्य ये थ्रो रे करी हबो. Then cleaning debris and removing hazards. Clearing debris and hazards. So robotic systems such as excavation robot, bulldozers are used to clear the debris and hazardous material, speeding up the rescue process. ये भी या थ्रो रे कहि परिबो. These robots are particularly useful in contaminated area, that is chemical spills or nuclear zones. Autonomous underwater vehicle AUV. In water related disaster such as flood and tsunami, underwater robot assist in identifying submerged structure, assessing underwater damage and locating missing person. 2004 रे जो इंडियन ओशन सुनामी होता अंडर वाटर रोबोट्स आर डिप्लॉयड टू इंस्पेक्ट द अंडर वाटर डैमेज एंड असिस्ट इन द रिकवरी. तो ये सब एग्जांपल देले तुमको भल से मार्क मिलियो. Then robotic firefighting system can withstand extreme heat and excess fire zones where human firefighter cannot. है ना, हीट जोन की मत जाई परियो robotics. And these robots use water cannon, fire supplements to control and extinguish the fire. These are basically robotics application: search and rescue, drone, disaster monitoring, clearing the debris and removing hazard, autonomous underwater vehicle, and robotic firefighters. So we example सहित दे देबो. Success story देखिबा. India's flood management with remote sensing. India experience with monsoon induced flooding led to the adoption of remote sensing technology. By leveraging satellite data, weather forecast, geographical information system, the government can predict the flood prone region and plan evacuation strategy. जेमती आमर ओडिसा रो फनी वगैरह हेतिला, evacuation बहुत ही इजीली हेतिला आ बहुत जल्दी हे जाइतिला evacuation. Plan evacuation. For instance, during the Kerala flood in 2018, remote sensing enabled the real-time monitoring of water level, aiding rescue operation and resources allocation. Odisha State Disaster Monitoring Authority, Disaster Mitigation Authority, has developed a web-based platform called Satark to provide warning information for various hazards such as heat wave, lightning, drought, and flood monitoring.
एटा देखियो जाई न्यूज रे ए वेबसाइट जाई देखियो सतर्क जे कि OSDMA ओडिशा स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन। So conclusion देखिवा the role of robotics in disaster response with using disaster effective way to save more people in less time are needed. Robotics can enhance search and rescue operation in a inaccessible and dangerous environment. Unmanned aerial vehicle collect aerial imaging and smaller UAV are better for navigating collapsed structure. Unmanned ground vehicle can enter the buildings. Legged robot provide additional mobility. Multi-robot system utilize different strength. Robotics in disaster response has evolved from a small incident to large disaster. Okay, help. Okay, so these are overall आमे देखिवा पांचटा क्वेश्चंस देखिले और बहुत सारा जोंडे की बर्निंग इश्यू अच्छी ता ऊपर आमे देखिले कि डिजास्टर ऊपर रोबोटिक्स कौन हेल्प करि परिबो और देखिले थोरियम रिजर्व एवं ताकू सस्टेनेबल केमिति डेवलपमेंट रे अचीव करिया पई हेल्प करिवो नानो टेक्नोलॉजी मेडिसिन ऊपर एंड देन वुमेन इन स्टेम एंड देन हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, तो दीज आर आमे सब ये देखिलु आउ नेक्स्ट काली देखिबा आमे एथिक्स पार्ट देखिबा तो एवरीडे बेसिस रे तुम घंटे भितरे बहुत किसी तुम्हें इनफॉरमेशन पाइजिब एवं तार सब नोट्स करके रखी दउथबो काम रे आसीबो एग्जाम रे काम। So that's it for today guys. Thank you. Thank you for watching. God bless you all. जय जगन्नाथ।